Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. The government of Sindh and the people of Pakistan are incredibly grateful to the international community, to our international partners for coming to our aid in our most difficult and most testing time. Most of you here have heard this many times before, but I would like to go through and once again remind everyone the devastation that we faced as a result of these monster monsoons. Our monsoons started in June. They went on into July, into the end of August. And once the rains finally stopped, 100-kilometer lake formed in the middle of Pakistan, where we once had villages, towns, agricultural lands. There was water, and more water as far as the eyes could see. मैं इस हादसा को, इस कुदरती आफत को असल मैं कहता आ रहा हूं कि ये हमारे लिए क़यामत से पहले क़यामत था. For us, this was the apocalypse before the apocalypse. For a province, for a country that has experienced monsoons before, that has experienced floods before, we had never, not in our recorded history, not in the recorded history of our country, nor in the recorded history from colonial Britain, ever has anything on this scale been witnessed. 1 in 7 Pakistanis affected, 33 million people. 7 में से 1 पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी इस सैलाब से मुतासिर थे. 5 million acres of standing crop were washed away in a single flood as a result of a single monsoon. We say that the agriculture economy is the backbone of the Pakistani economy. ज़राअत हमारा मीशत का बैकबोन रहा है, और इस सैलाब ने, इस कुदरती आफत ने, this natural disaster broke our backbone. The farmers of Sindh, Punjab, the agriculturists from Pakhtunkhwa, Balochistan, this tragedy, this disaster took from those that provide for the rest of us, those that feed the rest of the country. Unka economic means of earning income is devastated, nowhere to go. Aur hamara sab is mushkil ghadi mein, at the most difficult time, we were incredibly grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres, जो उसी वक्त यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का जो सेशन है वो हर सितंबर में होता है और हर साल होता है, और किसी यूएन सेक्रेटरी जनरल के लिए उसका सबसे मसरूफ वक्त होता है. इट्स द बिजिएस्ट टाइम फॉर एनी यूएन सेक्रेटरी जनरल. But he left the UN General Assembly and arrived here in Pakistan and has really held our hand from the relief phase to our successful conference in Geneva. We're incredibly grateful to the UN Secretary General for his support and coordination, particularly with the Foreign Office of Pakistan and our representative at the United Nations, that together with the UN Secretary General we've managed to galvanize the international community, international organizations, and came together to achieve what many said was impossible.
हमें कहा जाता था कि देखिए पूरी दुनिया में मुआशी बहरान है, कुदरती आफत भी जगह जगह हो रहा है, यूक्रेन का जंग चल रहा है और पूरी दुनिया का इमदाद फोकस इन चीजों पे है, तो आप अपने उम्मीदें कम रखें. It was very clear that given the international climate, given the war in Ukraine, given the economic challenges post-COVID in Ukraine that we're feeling all over the world, given geopolitical tensions, the international and national consensus was that Pakistan was to come back empty-handed from the UN Geneva Conference for a Resilient Pakistan. और मैं समझता हूं कि हमारा यूनिटी गवर्नमेंट का इस वक्त तक सबसे बड़ा कामयाबी, हमारा खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा कामयाबी, यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल का अपना एक बहुत बड़ा कामयाबी यह है कि इस माहौल में, इस बहरान में पाकिस्तान ने जो दुनिया से मांगा, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, इंटरनेशनल इदारे तक, जितना हमने मांगा था उससे ज्यादा हमें प्लेज किया गया. Whatever Pakistan had requested from the international community, whatever the United Generals Secretary General had requested from the international community, our achievement is that despite these challenges, we were pledged more than what we asked for, and the people of Pakistan are incredibly grateful, particularly to the UN Secretary General, for his role in this entire process. But just because we have met our target, just because we have exceeded our target, it doesn't mean that our problems are over. हमारा जो मुतालबा था, हमारा जो आस था, our target, that was half of what is required for the reconstruction and rehabilitation. The government of Pakistan had pledged to match international commitments, and of course, as part of that, the government of Sindh is willing to work on a 50-50 basis with the federal government, and we feel that it is appropriate that the federal government, it is as part of their commitment to match international pledges, that if we work 50-50 of that burden shared between the government of Sindh and the federal government, we may be able to come up with the necessary financing. But what I'm particularly proud of, जिस बात पे मैं बहुत फख्र कर रहा हूं कि इस पूरा सिलसिले में सबसे आगे, जैसे वर्ल्ड बैंक का सदर ने कहा है कि हमारे हुकूमत सिंध और चीफ मिनिस्टर सिंध का मेहनत की वजह से जिनेवा कॉन्फ्रेंस का ठीक 1 महीने बाद हम आज यहां खड़े हैं, और आज आपके सामने हमने लोगों के घरों को एक बार फिर बनाने का जो सिलसिला है वो हमने शुरू कर लिया है, और बहुत और काम है करने को. जिस तरीके से हमें ज़राअत को मदद करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, तालीमी इदारे को, सेहत के इदारे को खड़ा करना पड़ेगा. मगर उन दिनों में जब सैलाब का सिलसिला चल रहा था और मैं कभी यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ, तो कभी वजीर आजम के साथ, तो कभी मुल्क के मुख्तलिफ बैरून मुल्क के मुख्तलिफ सफीरों के साथ सैलाब मुतासरीन से मिलने के लिए रिलीफ के सिलसिले में अपने दौरे में था, जिससे मैंने मिला, चाहे वो सिंध का हो या बलूचिस्तान का हो या जहां से हो, उनका सबसे पहले जो हमसे रिक्वेस्ट था, जो मुतालबा था कि हमारा घर को नुकसान हुआ है, हमें घर बनाने में आप मदद करें. और मेरा उनसे ये वादा था कि मुश्किल है, टाइम लगेगा, मगर मेरा आपसे ये वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपके घर को, तामीरी नौ से हम आपके घर को बनाएंगे.